sexual reproduction, and the another one is in flowering plants. So we have to first understand what are they. तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हम ठीक से पढ़े हैं तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही we will bring another class on this topic. So this is our first class. Hope you will like it. Okay. So as the chapter starts, the first question is what is reproduction? You may ask the first question, what is the reproduction? What is the meaning of reproduction? What is the necessity of reproduction? Why it is there? So the definition of reproduction is, it is a biological process where an organism produces its offspring or children of its own kind. What do you mean by that? That is reproduction क्या है? एक प्रोसेस है जिसपे कि एक ऑर्गेनिज्म उसके जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जैसे कि आप नन्हे मुन्ने सारे बच्चे हैं, आप किसकी तरह दिखते हैं? भालू की तरह या किसकी तरह? आप अपने पापा मम्मी की तरह दिखते हैं ना. तो क्यों दिखते हैं? Because you all are produced from sexual reproduction. This is there in every scenarios of nature. हम nature के हर scenarios में देखते हैं. In animals, in plants also. Okay. So पहले but in today class we only focus on sexual reproduction in plants. Only we focus on plants. Okay. So as we already discussed about what is reproduction. तो reproduction क्या है बोले कि एक ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो ऑर्गेनिज्म में भी एज वी ऑल नो ऑल लिविंग बीइंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिज्म. दैट मींस द ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट्स और इट मे बी एनिमल. सो फर्स्ट द इन प्लांट्स देयर आर डिफरेंट फेनोमेना एंड डिफरेंट प्रोसीजर एज ऑफ द एनिमल्स. In plants and in animals they especially perform sexual reproduction because they are higher level of organism. They are multicellular organisms. But when we talk about lower group of organisms, they can perform sexual reproduction efficiently. So they perform a lower mode of reproduction, which we call primitive mode of reproduction. What are they? They are known as asexual mode of reproduction. So if we categorize the mode of reproduction, so then there are two modes of reproduction, especially asexual mode of reproduction firstly, secondly sexual reproduction. We will talk about asexual reproduction in our next videos or in the future videos, but in this topic we will only focus on sexual reproduction. So as the name suggests, sexual reproduction, that means it involves the formation of sex organ or involvement of sex organs and fusion of gametes. There are two types of, if we talk about in detail, so there are two types of organs which involve in the process of reproduction. What are they? That is male reproductive organ and female reproductive organ. Okay. Then they produce, as the name suggests, that is male reproductive organ. So it will automatically produce male gamete, and as the name suggests, female reproductive organ, it will produce female gametes. After the fertilization or fusion, it produces zygote or embryo. In plants, it forms a seed. After plantation, it forms the plant. And after the second name, as we see here, that is flowering plants. हम सबको पता है इतने सारे फूल बिछाए, हम इतने सारे फंक्शन में फूल देखे हैं, बहुत सारे गार्डन्स में भी फूल देखे हैं, बहुत जगह पे हम लोग देखेंगे फूल्स के महत्व देखे. हम तो एक्चुअली हम लोग इंडियंस हैं तो हर जगह फूल देखेंगे. किसी नेता के गले में, किसी मंदिर के देवता में, तो हम मैक्सिमम जगह पे फूल देखते हैं. सो एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which have the capabilities of production of fruit and flowers.
if they have flower, they can automatically produce fruits. Okay, they are known as, we categorize them in a group which are known as angiosperms. What we call them? Angiosperms. In the next slide we will discuss about in detail. Okay, what are the importance of, first we have to know what are the importance of sexual reproduction. Okay, let us start. So sexual reproduction in plants will only takes place in the groups known as angiosperms. What we call them? Angiosperms. So as I already told you that what is angiosperm? These are the group of plants which are the capabilities of producing flowers and fruits. जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे होते हैं. अभी तो समर का सीजन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो रसीले रसीले आम हाय हाय, तो उसी टाइप का. ओके, तो नेक्स्ट another features of sexual reproduction is it is genetic fusion. क्या है genetic fusion का मतलब क्या है? Involves fusion of male and female gametes. Fusion of gametes is called fertilization. At first, during the reproduction time, we do that. What is gametes and what is gametic fusions? What is fertilization? Okay. As the sexual reproduction means the involvement of sex organs. They produce gametes, and after that, when the gamete fuse, they produce zygote, which will after that they will bring some new organism. Next, in animals, अगर हम देखें ह्यूमंस के बारे में देखें तो ह्यूमंस में तो हम पता है कि हम क्या होता है, बेबीज का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट इन प्लांट्स वैसा कुछ नहीं होता. ऐसा होता है किसी कोई बच्चा पैदा होता है, उसको मिट्टी में गाड़ दो, उसके बाद नया बच्चा उग जाएगा, ऐसा ही नहीं है ना. बट प्लांट्स में ऐसा होता है. प्लांट्स में ऐसा कोई नहीं होता कि उसको जो छतुआ खिलाना होता है और दूध पिलाना होता है, ऐसा नहीं होता. तो उसके लिए क्या है ना, प्लांट्स में ऑलरेडी सारी चीज स्टोर्ड होते हैं. प्लांट्स एक ऐसा मिरेकल चीज बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं. सोचो हम अगर एक सीड को किसी में हम बो देते हैं जब मिट्टी में, तो उससे क्या होता है, एक ब्यूटीफुल प्लांट का जन्म होता है. मतलब उसमें वो सीड बना कैसे ना, वो सीड बना जब हम दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जब उसमें एम्ब्रियोज बना, वो उसमें जन्मिंग सीड. हम डिटेल्स में आगे देखेंगे कैसे क्या बना. जेन आता है कि जेनेटिक वेरिएशन आता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन कैसे आता है, जेनेटिक वेरिएशन. अच्छा, क्या आप लोग 100% आप लोग को अगर पता होगा, आप लोगों को कोई बोलता होगा कि अरे ये तो इसकी मम्मी की तरह दिखता है, इसका शक्ल पूरा इसकी मम्मी पे गया है, इसका शक्ल तो इसके पापा पे गया है. बट कभी सोचे कि क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या 100% आप अपने पापा की कॉपी हो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ऐसा है क्या? नहीं है ना. बट क्या है, तो वो डिफरेंस क्यों आया, क्या रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन व्हिच वी कॉल इट एज वेरिएशन. Variation means the different, okay, the difference of character, which is the extra amount of character which is present in our offspring, जो parents के पास नहीं है. ऐसा होगा ना कि आप लोग देखे होंगे कि कोई पिता माता दोनों होंगे जिनको पूरा पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं होगा. वो लोग फार्मर होंगे या कोई लेबर होंगे, किसी डिफरेंट काइंड से होंगे. बट उन लोगों के बच्चे देखेंगे तो कितने बड़े बड़े, कोई आईएएस बनता है, कोई नीट टॉपर होता है, ऐसा रहेगा. बट वो कैसे आया, वो तो उसी पिता माता के बच्चे हैं. कैसे आए, उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है कि वो लोग इतने बड़े बड़े महान बन गए, कैसे? दैट बिकॉज ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को एक कॉन्फिडेंस देता है, एक ऑर्गेनिज्म को न्यू कैरेक्टर का पुश देता है, न्यू कैरेक्टर से नवाजता है. क्या किसी को, एक चाइल्ड. ओके, दिस आर द वेरिएशन. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड वेरिएशन. आप इन योर नेक्स्ट टॉपिक्स जब जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे क्या कि जेनेटिक्स में हम जब पढ़ेंगे देयर आर टू टर्म्स, वन इज इनहेरिटेंस एंड अनदर वन इज वेरिएशन. जो हम बोले कि आप मम्मी की तरह दिखते हैं, आप पापा की तरह दिखते हैं, दैट मींस आपके पास कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स हैं जो कि मम्मी से आए हैं, पापा से आए हैं. दैट मींस यू हैव दैट काइंड्स ऑफ जीन्स. दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. द कैरेक्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन विद इन यू एज ऑफ द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के पास हैं और आपके पास आए हैं, क्या हम बोलते हैं हम इनहेरिटेंस. बट जो वेरिएशन के बारे में बोले तो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे और डिटेल में स्ट्रक्चर.
सो हम बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो दैट मीन्स इन्वॉल्वमेंट